Hello and welcome to CVR English. You're watching the news. You watch the big story. I'm Idris, and today our topic is the cooperation and innovation. It's about the BRICS summit, the 15th summit of economies of Brazil, Russia, India, China, and South Africa is taking place in Johannesburg, South Africa, from August 22nd to August 24. Prime Minister Modi and other BRICS leaders have discussed major global developments and leveraging the 5-member bloc's platform to find solutions to global challenges. इथियोपिया और तंजानिया में डिफेंस एकेडमीज और चैलेंजेस और कॉलेजेस का निर्माण किया है। बोत्सवाना, नामीबिया, युगांडा, लेसोथो, जाम्बिया, मॉरिशस, सेशल्स और तंजानिया में प्रशिक्षण के लिए टीम्स डिप्लॉय की है। लगभग 4,400 भारतीय पीसकीपर्स, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं, अफ्रीका में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। आतंकवाद और पायरेसी के विरुद्ध लड़ाई में भी हम अफ्रीका के देशों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। कोविड महामारी के मुश्किल समय में हमने अनेक देशों को खाद्य पदार्थों और वैक्सीन की आपूर्ति की। अब हम अफ्रीकी देशों के साथ मिलकर कोविड और अन्य वैक्सीन की ज्वाइंट मैन्युफैक्चरिंग पर भी काम कर रहे हैं। मोजाम्बिक और मालावी में साइक्लोन हो या मेडागास्कर में फ्लड्स, भारत फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में सदैव अफ्रीका के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा है। एक्सेलेंसी, लैटिन अमेरिका से लेकर सेंट्रल एशिया तक, पश्चिम एशिया से लेकर साउथ ईस्ट एशिया तक, इंडो पैसिफिक से लेकर इंडो अटलांटिक तक, भारत सभी देशों को एक परिवार के रूप में देखता है। वसुधैव कुटुंबकम यानी होल वर्ल्ड इज अ फैमिली। हजारों The BRICS is a grouping of the world economies of Brazil, Russia, India, China, and South Africa, formed by the 2010 addition of South Africa to predecessor BRIC. The original acronym BRIC or the BRICS was coined in 2001 by Goldman Sachs economist Jim O'Neill to describe fast-growing economies that would collectively dominate the global economy by 2050. The BRICS have a combined area of 39 crore 74,06,220 kilometers square and an estimated total population of 3.2 billion, or about 26.7% of the world's land surface and 41.5% of the global population. Brazil, Russia, India, and China are among the world's 10 largest countries by population area and GDP, and the latter three are widely considered to be current or emerging superpowers. In fact, all 5 states are members of the G20 with a combined nominal GDP of 28.06 United States dollars in trillions, total GDP of around 56.5 United States dollars in trillions again, and an estimated 4.46 trillion in fact dollars combined foreign reserves. The BRICS were originally identified for the purpose of the highlighting investment opportunities and had not been a formal intergovernmental organization. Since 2009, they have increasingly formed into a more cohesive geopolitical bloc, with their governments meeting annually at formal summits and coordinating multilateral policies. Bilateral relations among BRICS are conducted mainly on the basis of non-interference, equality,
and mutual benefit. नजर रहती है कितने महत्वपूर्ण इथियोपिया के साथ भारत के संबंधों के लिहाज से आप देखते हैं इसे? ये जो बायलैटरल्स होते हैं इसका बहुत ही महत्व रहता है, क्योंकि मल्टीलैटरल फोरम में जो आप संगठन के लिए जो बात कर रहे हैं वो एक तरफ है, बट एक जो होता है जो मैत्री की बात होती है, जो कि देश और देश के बीच होता है और नेताओं के बीच होता है, वो ऐसे बायलैटरल्स में और मजबूत हो जाते हैं। क्योंकि एक तरफ से आप मान लीजिए एक इनफॉर्मल सेटिंग है, बट इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यूज डिस्कस किए जाते हैं, जिसमें से हम लोग अपना कोऑपरेशन एजेंडा में कैसे आगे बढ़ा सके, अगर कोई दिक्कत है उसको कैसे हम लोग हल कर सके। और ये लीडरशिप लेवल पे जब ये डिस्कस कर लेते हैं तो बाकी जो सिस्टम होता है उसको फॉलो करने में बहुत आसानी रहती है। तो बिल्कुल अपने आप में ये महत्वपूर्ण तस्वीरें। अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इथियोपिया के प्रधानमंत्री के साथ में मुलाकात, और ये निश्चित तौर से द्विपक्षीय संबंधों के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। और इथियोपिया को एक तरीके से उन 6 नए सदस्य देशों के तौर पर जिनको ब्रिक्स में शामिल किया जा रहा महत्वपूर्ण देश है। और ऐसे In August 2023, at the 15th BRICS Summit, South African President Cyril Ramaphosa announced that Argentina, Egypt, Ethiopia, Iran, Saudi Arabia and the United Arab Emirates have been invited to join the bloc. Full membership will take effect on Jan 1st, 2024. BRICS have received both praise and criticism from numerous commentators. रेलवे रिसर्च नेटवर्क, एमएसएमईज के बीच करीबी सहयोग, ऑनलाइन ब्रिक्स डेटाबेस, स्टार्टअप फोरम जैसे कुछ सुझाव रखे थे। मुझे खुशी है कि इन विषयों पर उल्लेखनीय प्रगति हुई है। एक्सेलेंसीज, हमारे करीबी सहयोग को और व्यापक बनाने के लिए मैं कुछ सुझाव आपके सामने रखना चाहूंगा। पहला है स्पेस के क्षेत्र में सहयोग। हम ब्रिक्स सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन पर पहले से काम कर रहे हैं। एक कदम आगे बढ़ाते हुए हम ब्रिक्स स्पेस एक्सप्लोरेशन कंसोरियम बनाने पर विचार कर सकते हैं। इसके अंतर्गत हम स्पेस रिसर्च, वेदर मॉनिटरिंग जैसे क्षेत्रों में ग्लोबल गुड के लिए काम कर सकते हैं। मेरा दूसरा सुझाव है शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी में सहयोग। ब्रिक्स को एक फ्यूचर रेडी ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए हमें अपनी सोसाइटीज को फ्यूचर रेडी बनाना होगा। इसमें टेक्नोलॉजी की अहम भूमिका रहेगी। भारत में हमने दूर सुदूर तथा ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों और उनके तक शिक्षा पहुंचाने के लिए दीक्षा यानी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म बनाया है। साथ ही स्कूल के विद्यार्थियों के बीच इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए हमने देश भर में 10,000 अटल टिंकरिंग लैब्स बनाए हैं। भाषा संबंधी बाधाओं को हटाने के लिए भारत में एआई बेस्ड लैंग्वेज प्लेटफॉर्म भाषिणी का इस्तेमाल किया जा रहा है। वैक्सीनेशन के लिए कोविन प्लेटफॉर्म बनाया गया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी इंडिया स्टैक के माध्यम से पब्लिक सर्विस डिलीवरी को रिवॉल्यूशनराइज किया जा रहा है। विविधता भारत की एक बहुत बड़ी ताकत है। भारत में किसी समस्या का हल इस विविधता की कसौटी से निकलकर आता है। इसलिए ये सॉल्यूशंस विश्व के किसी भी कोने में The new members of the BRICS will be Argentina, Iran, Saudi Arabia, Egypt, the United Arab Emirates and Ethiopia. The new members will be incorporated into the group in Jan 2024. Earlier, South African Foreign Minister Naledi Pandor said that BRICS has agreed on the issue of enlargement and adopted a document
Outlining its principles, BRICS unites the world's largest developing economies, namely Brazil, Russia, India, China, and South Africa. About 24 other countries have expressed their interest in joining the club. South Africa's BRICS Sherpa Anil Suklal said earlier this month. आसानी से लागू हो सकते हैं। इस संदर्भ में भारत में विकसित इन सभी प्लेटफॉर्म्स को ब्रिक्स पार्टनर्स के साथ साझा करने में हमें खुशी होगी। मेरा दूसरा सुझाव है कि एक दूसरे की ताकतों की पहचान करने के लिए हम मिलकर स्किल मैपिंग पर कर सकते हैं। इसके माध्यम से हम विकास यात्रा में एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं। मेरा चौथा सुझाव है बिग कैट्स के संबंध में। ब्रिक्स के 5 देशों में बड़ी संख्या में विभिन्न प्रजातियों के बिग कैट्स पाए जाते हैं। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के अंतर्गत हम इनके संरक्षण के लिए साझा प्रयास कर सकते हैं। मेरा 5वां सुझाव है ट्रेडिशनल मेडिसिन को लेकर। हम सभी देशों में ट्रेडिशनल मेडिसिन का इकोसिस्टम है। क्या हम मिलकर ट्रेडिशनल मेडिसिन की रिपोजिटरी बना सकते हैं? एक्सेलेंसी, दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में ग्लोबल साउथ के देशों को ब्रिक्स में एक महत्व विशेष दिया गया है। हम इसका हृदय से स्वागत करते हैं। यह वर्तमान समय की मात्र अपेक्षा ही नहीं बल्कि जरूरत भी है। भारत ने अपनी G20 अध्यक्षता में इस विषय को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, इस मूल मंत्र पर हम सभी देशों के साथ मिलकर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। इस वर्ष जनवरी में आयोजित वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट में 125 देशों ने भाग लिया और अपनी चिंताओं और प्राथमिकताओं को साझा किया। हमने अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता देने का प्रस्ताव भी रखा है। मुझे विश्वास है कि सभी ब्रिक्स पार्टनर्स G20 में भी साथ है और सभी हमारे प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। इन सभी प्रयासों को ब्रिक्स में भी विशेष स्थान दिए जाने से ग्लोबल साउथ के देशों को उनका आत्मबल और बढ़ेगा। एक्सेलेंसी, भारत ब्रिक्स की सदस्यता में विस्तार का पूरा समर्थन करता है और इसमें कॉन्सेंसस के साथ आगे बढ़ने का स्वागत करता है। 2016 में भारत की अध्यक्षता के दौरान हमने ब्रिक्स को बिल्डिंग रिस्पॉन्सिव, इंक्लूसिव एंड कलेक्टिव सॉल्यूशन से परिभाषित किया था। 7 साल बाद हम कह सकते हैं On the final day of the 15th edition of the BRICS summit, South African President Cyril Ramaphosa announced the expansion of the group and announced new entrants. The list of the new members taking part in the BRICS include Argentina, Iran, Saudi Arabia, Egypt, United Arab Emirates, and Ethiopia. First of all, as a finance minister of a state, he should have studied the details. Government of India doesn't take ad hoc decisions on the devolution of taxes or finances. Government of India's finance ministry takes a decision on the basis of the recommendations of the Finance Commission. If the state government can come out and reveal to the public the basis of this allegation, I am sure people will realize the fact. I am reminded of an earlier incident where the same finance minister had come out with a statement saying that
the government of India cut down the debt admissibility to Kerala. So I had challenged the finance minister to seek clarification from the finance minister. So he duly wrote a letter, and after the reply was received, he is keeping mum. He doesn't have anything to say. So now he has come up with a new allegation saying about the tax devolution. What is the tax devolution mechanism? It's on the basis of the 15th Finance Commission. There are lot of parameters to decide the tax devolution. It is population, it is the area, the geographical area, it is the greenery in the state, it is the GSP, there is the population control, and also the tax collection of the state. In all these factors, if there is any discrimination by the state government, by the government of India, on the basis of any political consideration, let them say. I am sure they will not be able to say anything. Contrary, I would like to say that the direct tax collection in the state has been less than the national average. National average has been 74% growth. State growth has been 42%. During the last year, the local bodies' building tax collection was less than 30%. The GST department was reconstituted only in the month of January this year, after 6 years of GST getting implemented. So that means they were all sleeping for the last 6 years. So the inefficiency of the state government. United Arab Emirates and European in the opening of remarks of the BRICS Summit, South African President Cyril Ramaphosa gave a short briefing on Johannesburg Declaration and the future of the group. I quote him here: "We highlighted the need of the beneficial economic growth and reform of the multilateral systems. We are concerned about ongoing conflicts in many parts of the world," he said at the summit. ही हमारे कार्यक्रम की शुरुआत ब्रिक्स बिजनेस फोरम से हो रही है। सबसे पहले मैं राष्ट्रपति रामाफोसा को उनके निमंत्रण और इस बैठक के आयोजन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल को 10वीं वर्षगांठ पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। पिछले 10 वर्षों में ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल ने हमारे आर्थिक सहयोग को बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण। The term BRIC was originally developed in the context of the foreign investment strategies. It was introduced in the 2001 publication Building Better Global Economic BRICS by then the chairman of Goldman Sachs Asset Management, Jim O'Neill. The term was coined by Rupa Purushottam, and who was a research assistant in the original report. For investing purposes, the list of the emerging economies sometimes included South Africa, which expanded the acronym to BRICS or BRIC. पूर्ण भूमिका निभाई है। 2009 में जब ब्रिक्स की पहली समिट आयोजित की गई थी, तब विश्व एक बड़े आर्थिक संकट से बाहर आ रहा था। उस समय ब्रिक्स वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक आशा की किरण के रूप में उभरा था। वर्तमान समय में भी कोविड महामारी, तनावों और विवादों के बीच विश्व आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा है। ऐसे समय में ब्रिक्स देशों के एक बार फिर महत्वपूर्ण भूमिका है। फ्रेंड्स, वैश्विक अर्थव्यवस्था में उथल-पुथल के बावजूद भारत आज विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। जल्द ही भारत $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगा।
The foreign ministers of the initial 4 BRIC general states, Brazil, Russia, India and China, met in New York City in September 2006 at the margins of the general debate of United Nations Assembly, beginning a series of high-level meetings. A full-scale diplomatic meeting was held in Yekaterinburg, Russia on 16 June 2009. The BRIC grouping's first formal summit, also held in Yekaterinburg, commenced on 16 June 2009 with Luis Inácio Lula da Silva, Dmitry Medvedev, Manmohan Singh and Hu Jintao, the respective leaders of Brazil, Russia, India and China, all attending. The summit's focus was on improving the global economic situation and reforming financial institutions and discussing how the 4 countries could better cooperate in the future. There was further discussion of ways that developing countries such as 3 or 4 of BRIC members could become more involved in global affairs. इस बात में कोई संदेह नहीं कि आने वाले वर्षों में भारत विश्व का ग्रोथ इंजन होगा। ये इसलिए है क्योंकि भारत ने आपदा और मुश्किलों के समय को आर्थिक सुधार के अवसर में परिवर्तित किया। पिछले कुछ वर्षों में हमने मिशन मोड में जो रिफॉर्म्स किए हैं उनसे भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में लगातार बढ़ोतरी हुई है। हमने कंप्लायंस बर्डन को कम किया है, रेड टेप को हटाकर रेड कारपेट बिछा रहे हैं। जीएसटी और इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के लागू होने से इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ा है। रक्षा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्र जिनको प्रतिबंधित माना जाता था, आज प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिए गए हैं। हमने पब्लिक सर्विस डिलीवरी और गुड गवर्नेंस पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया है। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से In the aftermath of the Yekaterinburg summit, the BRIC nations announced that the need of a new global reserve currency which would have to be diverse, stable and predictable. Although the statement that was released did not directly criticize the perceived dominance of the United States dollar, something that Russia had criticized in the past, it did spark a fall in the value of the dollar against other major currencies. भारत ने फाइनेंशियल इंक्लूजन की और एक बड़ी छलांग लगाई है। इसका सबसे अधिक लाभ हमारी ग्रामीण महिलाओं को मिला है। आज एक क्लिक से भारत में करोड़ों लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किए जाते हैं। अब तक $360 बिलियन से भी अधिक ऐसे ट्रांसफर किए जा चुके हैं। इससे सर्विस डिलीवरी में पारदर्शिता बढ़ी है और भ्रष्टाचार और मिडलमैन कम हुए हैं। प्रति गीगाबाइट डाटा की कीमत में भारत सबसे किफायती देशों में है। आज भारत में स्ट्रीट वेंडर से लेकर बड़े बड़े शॉपिंग मॉल तक यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का इस्तेमाल किया जाता है। आज विश्व के सबसे अधिक डिजिटल ट्रांजैक्शन वाला देश भारत है। यूएई, फ्रांस, सिंगापुर जैसे देश इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं। ब्रिक्स देशों के साथ भी इस पर काम करने के लिए अनेक The BRICS Forum, an independent international organization encouraging commercial, political and cultural cooperation among the BRICS nations, was formed in 2011. In June 2012, the BRICS nations pledged $75 billion to boost the lending power of the International Monetary Fund, that is IMF. However, this loan was conditional on IMF voting reforms. In late March 2013, during the 5th BRICS summit in Durban, South Africa, the members
In fact, the member countries agreed to create a global financial institution intended to cooperate with the Western-dominated IMF and World Bank. After the summit, the BRICS stated that they plan to finalize the arrangements for this new development bank by 2014. However, disputes relating to burden sharing and location slowed down the agreements. At the BRICS Leaders Summit in St. Petersburg in September 2013, China committed $41 billion towards the pool, Brazil, India and Russia $18 billion each, and South Africa $5 billion. China, who holds the world's largest foreign exchange reserves and contributes the bulk of the currency pool, wants a more significant managing role, said one BRICS official. China also wants to be the location of the reserve. Brazil and India want the initial capital to be shared equally. We know that China wants more, said a Brazilian official. However, we are still negotiating. There are no tensions arising yet. On 11th of October 2013, Russia's Finance Minister Anton Silivanov said that creating $100 billion in funds designated steady currency markets would be taken in early 2014. The Brazilian Finance Minister Guido Mantega stated that the fund would be created by March 2014. However, by April 2014, the currency reserve pool and development bank had yet to be set up, and the date was rescheduled to 2015. One driver for the BRICS Development Bank is that the existing institutions primarily benefit extra BRICS cooperations, and the political significance is notable because it allows BRICS member states to promote their interests abroad and can highlight the strengthening positions of the countries whose opinion is frequently ignored by their developed American and European colleagues. भावनाएं हैं। भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर हो रहे निवेश से देश का परिदृश्य बदल रहा है। इस वर्ष के बजट में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लगभग $120 बिलियन का प्रावधान रखा है। इस निवेश के माध्यम से हम भविष्य के एक नए भारत की That was all today's big story. For more news and updates, keep watching CVR English.